So 10.7. Okay. So this is your statement. I think वो statement clear है. So that is elliptical shape is your initial view. You rotate it in a such a way that the apparent shape will look like a circle with a maximum dimension. So first of all, you are going to create a ellipse and you are going to assume that it is parallel to the HP plane because you are getting the apparent view in a top view. मतलब आपको टॉप व्यू में अपरेंट शेप आ रहा है इसलिए आप उसको पैरेलल किसके एज्यूम करेंगे एचपी के. ठीक है. सो यहाँ पे हम एलिप्स क्रिएट करेंगे विद द डायमेंशन ऑफ 150 मींस 1.5 AutoCAD यूनिट एंड इसके मिड पॉइंट से मतलब 1 2 3 यहाँ पे आएगा करीब कितना है 200 mm. तो यहाँ से इस डायरेक्शन 1 and each direction 1. Okay. Now we are going to change the color. Fine. Now I am going to make the ellipse. Okay. So ellipse का end point we need to define. So either ये एक end point होगा, एक point end point ये होगा. आपने यहाँ पे किया तो ये आपका ellipse you have formed. Okay, done. Now you can do the labeling also. ये आपका point A हो गया, ये आपका point B हो गया, ये point C हो गया, and this is your point D हो गया. Clear? Now in other view what you see, अगर आपको ellipse दिख रहा है टॉप व्यू में तो अदर व्यू में क्या दिखेगा फ्रंट से वो लाइन. सो दैट लाइन यू नीड टू मेक. सो यहां से पैरेलली यू आर गोइंग टू मेक ए लाइन इसके पैरेलली. सो यू कैन चेंज द कलर. ओके. सो नाउ इफ यू वांट यू कैन डू द लेबलिंग हियर आल्सो. Okay. Similarly here, what is this point is C dash. Okay. एक यहाँ मिड में आएगा. So if you want you can highlight. ये एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका B dash and D dash. Clear? Okay. Now after that आपको क्या दिख रहा है आपका apparent view top view में that is a circle. So with the maximum dimension. So ये dimension is not going to change. So it will look like a circle only in the next step means इसका जो maximum dimension होगा वो 150 mm ही होगा इसके according. So we are going to make a circle. So before that you can transfer like this. Okay. Now we are going to make a circle. A1, 2, 3. So this is your circle that we are going to change the color. But here also you need to show the coordinate for showing the point. मतलब ये जो दो लाइन है आपके एक्सिस उसको यहाँ सर्कल में भी शो करना है बिकॉज आपको शो करना है पॉइंट्स को. ठीक है. डन. सो ये अभी 150 mm के डायमीटर में आपका एक सर्कल क्रिएट हो गया जो कि नेक्स्ट स्टेप में गिवन है क्वेश्चन. ओके. नाउ फॉर 150 mm डायमेंशन कन्वर्ट करने के लिए यू हैव इंक्लाइंड योर एलिप्स
in some angle, so उसके basis पे आपको line को incline करना है, ठीक है? So we are going to take one projected from this point and one projected point from this. फिर ये line का length कितना है? 200 mm. So we can draw arc, center method. Center you can choose this end point. Put in the AutoCAD unit in unit form is 2. ये आपका कट किया. That you join this 2 point. Okay. Now you can just okay. So that's the way. Now you can mark the point A dash, C dash. How you transfer this B dash, D dash, because it is there in the middle, that is already no. So either you can highlight through, you can create a point in mid. तो यहाँ पे आपका B dash D dash होगा. That you can transfer, or either you can take the arc और arc के through से भी आप transfer कर सकते हैं, ठीक है? So thus measure this angle, turn off the snap. So ये angle आपका आ गया 41 degree. This is the answer. Fine. इसमें एक चीज clear है ये. One more thing, I think during AutoCAD practice, I have seen that many of them using this cursor as a small size. So how you can increase the size of the cursor? You can just right click, go to the option. यहाँ पर crosshair का size it will give you in the display option, display tab. These are the many tabs are there. In the display tab, the crosshair size you can just increase to 100. Okay. So this crosshair size will be help you while transferring the points or for drawing the projected line. Okay. So that correction you can do.